हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज जो है हम नया चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रामोलिकुलर फोर्स पर कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन the force of attraction between the molecules of a substance are called intermolecular force. इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं ये सबस्टेंस में टू मॉलिक्यूल के बीच में काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, अलग अलग कंडीशन होंगी। तो इसमें बात करते हैं इनके बीच में जो ये अट्रैक्शन लगता है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन लगती है, इस अट्रैक्शन फोर्स को इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहते हैं। इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहते हैं। द इंट्रामोलिकुलर फोर्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, बट इन मोस्ट 2 कैटेगरीज, वैन डर वाल्स फोर्स एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्स। देखिए, these are two types. Intramolecular force are divided into 2 categories. First, van der Waals force. And second, strong force. Students, the van der Waals force are divided into 3 categories. First, second, and third. The van der Waals force are divided into 3 categories. First, dipole force. Dipole force. And second, dipole induced force. The third, dispersion force. So, the intramolecular force are divided into 2 categories. First,
van der Waals force and second strong force. The van der Waals force are divided into three categories. First, dipole force, and second, dipole induced force and diffusion force. And the strong force divided into two categories. First, ionic force, and second, hydrogen bonding. So we will discuss in the detail all forces, all intramolecular forces. So the van der Waals forces are very weak than the strong force. So discuss firstly dipole force. Dipole force. This is force attraction between the two molecules in substance. So we will discuss in detail and explain the all intramolecular forces. All intramolecular forces. First, dipole force. Dipole force. So define the dipole force. Compounds having atoms of different electronegativity act as dipole. The molecules like SO2, HCl, NO2 are polar molecule. All polar molecules. देखिए स्टूडेंट, जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स डाइपोल इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, van der Waals फोर्स है। तो इस प्रकार के van der Waals फोर्स में इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं और उनके परमाणुओं के बीच में, उनके एटम्स के बीच में एक विशेष अट्रैक्शन फोर्स लगती है। लेकिन इस प्रकार की जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो उन मॉलिक्यूल के एटम्स यानी कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल डिफर हो, तो वहां ये फोर्स लगती है। देखिए ये जो फोर्स लगी हुई है, ये इसे इंट्रामोलिकुलर फोर्स यानी कि डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स कहते हैं।
dipole force. This is called the dipole force. So the compounds having atoms of different electronegativity act as dipole the molecule like SO2, HCl, NO2 and R polar molecules. So this is called the dipole force. This is called the dipole force. Dipole force. Dipole interaction force is also called Kisam force. किशन ने इसको डिस्कवर किया था, इसको किशन फोर्स भी बोलते हैं और इसको डिस्कवर 1912 में किया गया था। द इंट्रैक्शन, अगर हम बात करें इसी की, तो द इंट्रैक्शन एनर्जी इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6 power of the distance between two rotating polar molecule। बात करते हैं इंट्रैक्शन एनर्जी। इंट्रैक्शन एनर्जी, the interaction energy, the interaction energy inversely proportional to the sixth power of the distance between two rotating polar molecule, rotating power molecule। rotating polar molecule। interaction energy proportional to 1 upon the distance two molecule। distance, this is first molecule and second molecule। this distance two molecule are so denoted by the small r, the distance of two molecule। So the interaction energy in inversely proportional to the sixth power of the distance between two rotating molecule। This is first rotating molecule, second rotating molecule and the first rotating molecule। So the distance of the two molecule is r and denoted by the distance small r, so r की power 6। the interaction energy is equal to k negative 1 upon r6। but in the solid, but this is the liquid, but in the solid is equal to minus k 1 upon r cube, 1 upon r cube। k is the
probability constant. The magnitude of the force also depend on the value of dipole moment of a molecule. So let's discuss next intramolecular force. Next, intramolecular force. Dipole induced force. Dipole induced force. Dipole induced force. So firstly, this is a non-polar. This is a non-polar molecule. Non-polar. And this is polar molecule. So the definition clear of the dipole induced dipole force. The force of attraction. The force of attraction. The force of attraction excites not only between molecule with permanent dipole but also between the molecule of a dipole and non-polar molecule. Non-polar molecule. Non-polar molecule. Non-polar molecule. Non-polar molecule. Non-polar molecules. देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं, पहले जो बात की गई थी कि डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स क्या होते हैं, और अब सेकेंडली हमारे पास है डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स. व्हाट इज द डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्साइट नॉट ओनली बिटवीन मॉलिक्यूल विद परमानेंट डाइपोल बट आल्सो बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डाइपोल एंड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. दिस इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल. जो पहले हमने स्टडी की थी वो की थी पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है उसे डाइपोल इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहते हैं. लेकिन स्टूडेंट, इसमें थोड़ी कंडीशन डिफर हो गई है. एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है. इनके जो बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रही है, इस फोर्स को डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स कहते हैं. डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स कैसे आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे इसका
कैसे इसको आइडेंट करेंगे कि एक तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए और एक पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है उसको हम डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे डिफ्यूजन फोर्स की और जो परमानेंट फोर्स हमारे पास है स्ट्रॉन्ग फोर्स।